विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। नमस्कार, विश्व शांति धारा में आपका स्वागत है। पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती के अनुसार जीवन की हर समस्या का हल धर्मशास्त्रों में मिलता है। When I came to India with a backpack 25 years ago, just घूमने के लिए, thinking it was just an adventure, just a holiday. But the power of this nation, the power of the spirituality, the power of the culture, the Sanskriti, was so much कि उसी समय ही माँ गंगा का पावन तट पे खड़े होते हुए ऐसे अनुभव हुआ कि यही मेरा घर है, मुझे यहाँ रहना चाहिए। That was 25 years ago. और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ because when we speak about science and spirituality or science and religion, लोगों को लगता है they are separate things. Science over here, religion over there. Either we are scientists or we are spiritual people. But that isn't true. Actually, जो science आजकल discover कर रहा है is what our saints and our sages and our rishis told us thousands of years ago in our shastras. Science uses tools. The tools of science are microscopes and telescopes, beakers and Bunsen burners. And they tell us things about the world. But amazingly, apni sages and saints and rishis used none of these tools. कोई भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की इन्वेंशन से पहले, कोई भी कैलकुलेटर इन्वेंशन से पहले, sitting in meditation, sitting in the caves in the Himalayas, they gave us the zero. They gave us Vedic mathematics. They gave us the Panchang. आप सोचिएगा, बिना telescope, बिना calculator, बिना computer, हजारों साल पहले, they were telling us the horoscopes, the phases of the moon, the phases of the planet. But they were using their inner tools. अब रामायण देखिएगा, अभी रामनवमी आने वाले, रामायण देखिएगा. In the Ramayan, what do we have? Pushpak Raman. Thousands and thousands and thousands of years ago, कोई सोच नहीं सकते थे. उसी समय there was not a car, there was not a train. Nobody could imagine that through the air something could fly. They call it string theory. We call it Vasudhaiv Kutumbakam. The world is a family. As we act, rippling out into the world. So
what our spirituality gives us is not separate from science. It's just science that uses inner tools of knowing that are much more powerful, because outer tools keep changing. Keep changing, which means the truth keeps changing. 200 years ago, if in a science class someone had asked you the shape of the earth, and you had said flat, they would have said, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, earth is flat. 200 years ago, वो ऐसे सोचते थे. Then the telescope was invented and we realized, oh, the earth is round. The truth changed as our tools changed. पहले सोचते थे that everything revolved around the earth. Then our telescope showed us, no, actually, we are revolving around the sun. The truth is changing in science. But अपनी अध्यात्मता में, जब हम कहते हैं सनातन dar, मतलब it is not changing. That which was true thousands of years ago. और यहाँ का culture, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यही बढ़िया है. और ये आप लोग, you have this gift of living in, of learning this dharma. And this dharma is the best tool that you need for your life. कोई भी question, कोई भी कठिनाई, whatever your struggles, dharma is the answer. We are taught, dharmo rakshati rikshatha. If I protect dharma, matlab I live according to dharma, with ethics, with values, with sanskaras, dharma will protect me. इसका मतलब आप सभी लोग, मेरे भाई बहन, students, आप लोग खड़े हो जाओ देश के लिए, विश्व के लिए. The country needs you. The world needs you. Don't worry. Don't be afraid. Don't worry कि सामने वाले क्या सोचेगा. You need courage. Courage gives us that ability to be creative in the world, to stand up. And that courage कहाँ से आते हैं? अपनी connection. Connected to our roots, to our heritage, to our dharma, to our spirituality. And this is why you are here at this beautiful university, giving you the spiritual touch. Math and science kahin bhi mil sakte. But sanskar, that culture, you get it only here.